नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन हाउ टू टॉक टू एनीवन। दोस्तों यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम सोशलाइज करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम हिचकिचाते हैं, हमें लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें अगले व्यक्ति से किस प्रकार से इंटरैक्ट करना चाहिए ताकि we try and make a bond with that person, ताकि हम उस व्यक्ति के साथ सही प्रकार से कांटेक्ट इनिशियलाइज कर पाए। और इसी सोच के साथ दोस्तों हमने ये आज का वीडियो बनाया है। सो इफ यू वांट टू स्पीक टू एनीवन, इफ यू वांट टू टॉक टू एनीवन, व्हाट डू यू नीड टू डू? Point number 1, go out alone. If you go out with somebody who is familiar to you, so you end up speaking about things that you already know about that person. लेकिन जब आप अकेले बाहर जाते हैं तो you're forced to speak to others. So take it as an opportunity to get to know other people. Point number 2 दोस्तों, be prepared to initialize the contact. So now once you're on your own in an event or in a function, do not wait कि कोई आएगा आपसे बात करेगा, आप कोने में खड़े रहेंगे। नहीं, यू नीड टू गो अहेड, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगी, अमिताभ बच्चन जी से मैं एक बार मिली थी। वो इतने बड़े कलाकार हैं, द वर्ल्ड नोज हिम। लेकिन वो जब भी किसी से मिलते हैं दोस्तों तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन। एंड आई वॉज सो टच्ड बाय दैट थिंग, कि इतना बड़ा व्यक्ति है ये, बट इतना हम्बल है ये। सो वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम इज दैट नो मैटर व्हेन यू आर इन द हायरार्की, बट इफ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अगले व्यक्ति को लगता है कि ओके, इवन इफ यू आर सच अ ह्यूज स्टार, यू आर सो हम्बल टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पीपल हु आर अराउंड यू। और हम अमिताभ बच्चन जी के लेवल पे तो नहीं है, सो हम हमारे ही लेवल पे ईजीली खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ईजीली वो कंपैशन ला सकते हैं, ईजीली वो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, जिससे हम लोगों को बताएं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट टॉक अबाउट द वेदर। दोस्तों आप क्या कन्वर्स करते हैं उससे एक कन्वर्सेशन या तो माइंड ब्लोइंग बन सकता है या तो बोरिंग बन सकता है। अगर आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे या वेदर के बारे में बात करेंगे तो ये कन्वर्सेशंस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे एंड पीपल विल नॉट वांट टू इंटरैक्ट विथ यू। सो इन सच सिचुएशंस what you need to do is you need to talk about something interesting. You need to give out open-ended questions. Also, you need to make sure that आप कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे you rub somebody the wrong way, like speaking about religious topics or politics or even for that matter something negative that you saw on the news. And nevertheless, if you cannot think of something interesting on your own, basic questions like, hi, how are you? What do you do? How are you feeling today? Do you like the lights? Do you like the party? ऐसे बेसिक चीज़ें भी can break the ice for a mind-blowing conversation. Point number 4 दोस्तों, encourage people to talk about themselves. दोस्तों एक सर्वे कहता है कि people love to talk about their lives. People love to talk about themselves. And this could be an interesting opener. When you ask people about their lives, they are more than comfortable in speaking about it. You can ask basic questions like what they do for their living, what are their hobbies, what they like to do, what they do not like to do, what do they like to watch on television. And while you talk about all these things, कहीं ना कहीं आप ये जान पाएंगे कि उस व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है, और इस इंटरेस्ट में से आपको बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि शुरुआत में आप उनके बारे में पूछते हैं, लेकिन उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि यू आर इंट्रोगेटिंग दैट पर्सन. You need to still share some information about yourself
टू, अगेन जब आप उनसे उनके इंटरेस्ट के सवाल पूछेंगे और आपको कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन कॉमन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए यू कुड टेल देम अबाउट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक एंड योर इंटरेस्ट टू. And this way, the conversation can become mind blowing. Point number 6. Why you interact with somebody for the first time. Be friendly, but do not be pushy or aggressive. Regardless of the fact that you are trying to meet new people, you are trying to make new friends. Never put that pressure on the other person on becoming your friend. If you're scared of failure or you fear of meeting somebody new, in your body language, you would come across as aggressive. So if somebody doesn't want to have a conversation with you, just let them walk away without being pushy. Instead, just be a little laid back and go with the flow, which means that you would have better conversations with the other people who are around you. Point number 7. Do not be embarrassed if you look nervous. People like vulnerabilities. If your voice cracks or, your hand sweats, just laugh it out. If you are an amateur comedian, just make a joke on it. Do not be embarrassed of what you feel about it. And finally, dosto, our last point. Know when to end your conversations. Whether your conversations are a flop or a success, you should know the point when you should wrap that conversation up. If a good conversation hits off, you could find a new friend. And if it doesn't, always remember, there are plenty of fishes in the sea. You could always have a good conversation with somebody else. Get their phone number so that you could be in touch with them. And leave the event high on your success.